वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का संस्कृत वर्कबुक सॉल्यूशन सेमेस्टर 2 संस्कृत वर्कबुक सॉल्यूशन, इसमें चैप्टर नंबर 5 है योजक तत्र दुर्लभा। तो इसके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन that it is correct answer and write the letter corresponding to the answer provided. So first, what things of all did the camel always watch? The answer is fault. Second, whose concentration is famous? The answer is cranes. Ushta swabhavena kidrasha asti? The answer is vakraha. Who is the king of desert? The answer is camel. Baka manushyavarni vaktu shakunti? False. Find out the Sanskrit word for the word king. The answer is nrupaha. Ushtra sarvada dosham eva pashyati riktasthane uchit कर्मपदः लिखत. 8. हे शुक तव चंचु वक्र अस्ति रिक्तस्थाने उचित विशेषण पद लिखत. हे कुकुर तव पुच्छ विक्रम अस्ति रिक्त स्थाने उचित विशेषण पद लिखत. पेज नंबर 32. 10. भवत अपि सर्वाणि अगाणी और दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में वक्राणि सन्ति. 11. भवान मरुभूम्या नृपः अस्ति रिक्त स्थाने उचित क्रियापद लिखत. क्वेश्चन 2. फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. एकदा उष्ट्र वने अटति. सेकंड, हे शुक्तौ चंचु वक्रा अस्ति. थर्ड, शृगाल पृच्छति उष्टमाता उष्टभ्राता कथम अस्ति. उष्ट वदति स्वास्थ्य समीचीन किंतु अन्यत् किमपि समीचीनं नास्ति. बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता. अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः. क्वेश्चन 3. ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन राइट फॉर द ट्रू or for the false statement in the given against the following statement. First, shukah swabhavena vakrah asti. न आंसर है. फिर सेकंड, शुकस्य चंचु वक्रा अस्ति आम आंसर है. थर्ड, बकः मनुष्यवाणी वक्तु शक्नोति न. शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति न. उष्ट मरुभूम्या नृपः अस्ति आम. क्वेश्चन 4. फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो यहाँ पे टेबल्स दिए, तो डायरेक्ट हम आंसर देख लेते. उष्टः वने अटति द कैमल इज रूमिंग इन द जंगल. शुक लज्जाक अनुभवति अ पैरट फील्स अशेम्ड. अह मोदकम खादामि I eat a sweet ball. Fourth, Kishan jalam pivati. Kishan drinks water. Fifth, Mala pustakam pathati. Mala read a book. Fifth, match the column A, B correctively to make complete sentences. तो ये मैच द कॉलम के आंसर्स देख लेते हैं. शुकस्य चंचु, द आंसर इज वक्रा किंतु स मनुष्यवाणी वक्त शक्नोति. कुकरस्य पुच्छ वक्र किंतु, द आंसर इज सः स्वामी भक्तः अस्ति. बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु, द आंसर इज तस्य एकाग्रता प्रचलिता. क्वेश्चन 6. फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट. उष्ट्र कैमल, वक्र क्रुक, चंचु बिग,
समीचीनम ओके, मरुभूमिः डेजर्ट, प्रयोजनम एम, योजकः ऑर्गेनाइजर, शुकः पैरट, कुकर डॉग. राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड. किंग नृप, फेमस वेल नोन प्रचलिता, अदर अन्यत, नेक ग्रीवा. द लेटर विच इज नॉट अ मंत्र, अमंत्र मक्षर. द वर्ड विच, द रूट विच इज नॉट अ मेडिसिन. मूल मनोषध्यम. पेज नंबर 34. जॉइन द वर्ड्स. अमंत्रम अक्षरम, अमंत्रम अक्षर. मूल अनौषधनम, मूल मनौषधनम. योजक तंत्र, योजक तंत्र. न अस्ति नास्ति, किम अपि किमपि. Question 9. Answer each of the following question in one sentence in Sanskrit. First, उष्ट स्वभावेन कीदृश अस्ति. The answer is उष्ट स्वभावेन वक्र अस्ति. Second, उष्ट वृक्षस्य उपरि क पश्यति. उष्ट वृक्षस्य उपरि शुकः पश्यति. उष्ट. Fourth, उष्ट शुक की कथयति. The answer is उष्ट कथयति हे शुक तौ चंचु वक्रा अस्ति. कस्य पुच्छ वक्रम अस्ति. आंसर इज श्वानस्य पुच्छ वक्रम अस्ति. कः मनुष्यवाणी वक्तु शक्नोति. कस्य ग्रीवा वक्रा. शुकः मनुष्यवाणी वक्तु शक्नोति वकस्य ग्रीवा वक्रा. कः मरुभूम्याः नृपः अस्ति. द आंसर इज उष्ट्रः मरुभूम्याः नृपः अस्ति. कस्य स्वामिभक्तिः प्रचलिता. द आंसर इज श्वानरस्य स्वामिभक्ति प्रचलिता. Question 10. Answer each of the following question in one sentences in English. Who is crooked by nature? The answer is the camel is crooked by nature. What does the camel always see? The camel always sees fault. Where does the camel see a parrot? The answer is the camel sees a parrot on the tree. Fourth, how is parrot's beak? The parrot's beak is crooked. Why does the dog feel ashamed? Because the camel says that the dog had crooked tail. How is camel's health? The camel's health is okay. What does the fox say about the parrot? The fox say the parrot's beak is crooked, but it can speak the human language. Page number 35. Question 8. What does the fox say about the song? The answer is the fox says the dog tail is crooked. Question 9. What does the fox say about the crane's neck? The answer is the crane's neck is crooked. It is well known for its concentration. Question 11. Translate the following sentences into Sanskrit. First, there is a camel. Answer is एकः उष्टः अस्ति. Once it is roaming about in the jungle. एकदा सः वने अहति. The camel laughs and goes ahead. अद्रः अस्ति अग्रे चलति. Fourth, oh God, your tail is crooked. The answer is हे कुकर तव पुच्छ वक्रम अस्ति. Oh brother camel, how are you? Answer अष्टभाता कथम अस्ति. Nothing is useless. निरर्थक नास्ति. In that matter, it is difficult an organizer. योजकः तत्र दुर्लभः. Question 12. Translate the following passages into English. माग्रे बकः अस्ति. बक दृष्ट्वा उष्ट वदति तव ग्रीवा वक्रा अस्ति. बकः उष्ट्रः प्रति पश्यति अपि न मार्गे शृगालः मिलति. The answer is on the way there is a crane. Seeing the crane, the camel says your neck is crooked. The crane does not look even out the camel. Second, मार्गे सह कुक्कर पश्यति उष्ट कुक्कुराय कथयति हे कुक्कुर तव पुच्छ विक्रम अस्ति. कुक्कुर लज्जाम अनुभवति उष्टः हसति अग्रहतः चलति. The answer is on the way it sees a dog. The camel tells the dog, oh dog, your tail is crooked.
द डॉग फील अशेम्ड, द कैमल लाफ एंड गोज अहेड। थर्ड, बकस्य ग्रीवा वक्र किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलित भवत सर्वाणि अडानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान् मरुभूम्याः नृप अस्ति अपि च तेषां चच्चो पुच्छस्य ग्रीवया च प्रयोजनम् अस्ति। द आंसर इज द crane's neck is crooked but its concentration is well known. All your body parts are also crooked but you are the king of the desert, and also there is some intention causes of their big tail and neck. Page number 36, 13 question. Frame the sentences as shown in the example. अमिता शिशु किंतु निर्भया अस्ति, नीमवृक्ष तिक्त किंतु गुणकारी अस्ति, रुग्णालय लघु किंतु स्वच्छ अस्ति, पर्वतः दूरे किंतु रमणीय अस्ति, कोकिलः कृष्ण किंतु मधुभाषी अस्ति। 14. फ्रेम सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। एषः शुकः तस्य कंठ मधुर अस्ति, एषः कुकुरः तस्य स्वामिभक्त प्रचलिता, स राष्ट्रपिता तस्य संकल्पशक्ति प्रचलिता, सह शिक्षकः तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता, सह छात्रालय तस्य व्यवस्था प्रचलिता। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।